Hello everyone, welcome to Ideals of Pune. On behalf of VNWC team, I welcome you all for Ideals of Pune. कहते हैं ना हीरो की कमी नहीं होती पर इन्हें ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। आज हम वही काम कर रहे हैं। हमारे पास हीरे हैं जो आज आपके साथ में हम उन हीरो के काम और उनको समय ने जो तराशा है उनकी चमक आज आप देखने वाले हैं। तो वैसे तो पैंडेमिक में डॉक्टर्स का काफी बोलबाला रहा है और डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। इस पैंडेमिक में हमने ये सब चीज को अनुभव किया है। बट मैं आज जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ वो अपने आप में ही काफी डिफरेंट सी है। क्यों डिफरेंट सी है? क्योंकि सिर्फ ये डॉक्टर नहीं है, ये ट्रेन कथक डांसर भी है, ये सेक्रेटरी ऑफ पुणे डॉक्टर्स एसोसिएशन भी है, सेक्रेटरी ऑफ एस्थेटिक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ प्रोग्रेसिव वुमेन। यानी सिर्फ डॉक्टर being an apart doctor, she is into multiple things. So let me welcome today Dr. Shubda Joshi. Hello, doctor. How are you? Hello, fine, and thank you very much, Romal. Thank you. Thanks to you, and thanks to dear Bobby Karnani. Thank you very much for inviting me. कहते हैं ना हीरो को बुलाया नहीं जाता, वो जहां होते हैं वहां चमक हो जाती है। सो आप उनमें से एक है कि आपकी प्रेजेंस ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर शुभदा, जब आपका नाम लेते हैं शुभदा बोलने में इतना शुभ है, तो डॉक्टर जब आप डॉक्टर है, आप लोगों को ट्रीट करते हैं और 20 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर। सो कैसे रहे ये 20 इयर्स की जर्नी आपकी ऑल टुगेदर, और इसके साथ में आपके डिफरेंट हॉबीज है जैसे कथक करना, ये सब चीजें आपको कैसे हेल्प करती है? Yes, Roman. First of all, once again, thank you and welcome to you. And I wish you all the best. And please take precautions because before we start our discussion, still we are fighting with the pandemic. And yes, I'm very much sure with taking all precautions and vaccination, we will come out of it. So once again, I wish you all the best. सी रोमन सी आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 20 years, बट जैसे वे बोलते हैं ना कि स्कूल में ही मेरा ये लाइकिंग था कि मैं अगर कुछ आगे बनूं तो मैं कुछ सोशल काम करने के लिए आगे जाऊं, बिकॉज दिस वाज माय फैमिली बैकग्राउंड. माय फादर वाज अ वेरी सोशल वर्कर. ही यूज्ड टू डू सोशल वर्क थ्रू रोटरी. सो ये घर ओके। पे ही जैसे हम पल बड़े हैं तो ये सोशल वर्क से ही पले बड़े हैं. जैसे सैटरडे में संडे में हम जैसे कुछ गरीबों को कुछ देने जाते थे, तो ये जब पता नहीं था कि इसको सोशल वर्क करते हैं, उसको कहते हैं, तब से हम ये कर रहे हैं. तो दूसरी चीज ऐसी थी कि मैं स्टडीज में बहुत अच्छी थी. मेरे घर में मेडिकल बैकग्राउंड तो नहीं था बट मुझे डॉक्टर बनने का बहुत क्रेज था. सो जैसे ही 10th हो गया तो आई वॉज डिसाइड कि मुझे ही बनना. After that, I took admission in medical college. I finished with my medical graduation. But जैसे बोलते हैं ना कि चलो डॉक्टर बनो, शादी करो, घर बिठाओ, ऐसे मैं नहीं कर सकती थी. And touchwood, my family was very supportive for that. So before my marriage, I started with my own hospital. तब तो ये पता नहीं था कि शादी, मैं तो बेसिकली आई एम फ्रॉम शोलापुर. तब ये पता नहीं था कि शादी कहाँ पे होगी. और यू नो दैट क्रेडिट गोज टू माय फादर बिकॉज 20 साल पहले कोई ऐसे फादर सोचते नहीं थे कि बाबा इतना इन्वेस्ट करो, शादी के बाद ये यहाँ पे रहेगी या कहाँ पे जाएगी. आई मीन्स वी वर नॉट अवेयर विद दैट. मुझे एक बड़ी सिस्टर भी थी, उसकी भी शादी नहीं हुई थी बिकॉज शी वॉज इन ट्रेनिंग ऑफ पुलिस अकेडमी. नाउ शी इज अ पुलिस इंस्पेक्टर बट शी हैड जस्ट क्लियर्ड हर एमपीएससी एंड वो अपने ट्रेनिंग में थी. तो देन आई आस्क माय फादर कि मुझे 3-4 साल तो शादी करनी नहीं है, तो मुझे मेडिकल प्रैक्टिस करनी है. बट तब मेरे पापा की शर्त थी कि मैं इन्वेस्ट तो करूंगा बट यू डोंट प्रैक्टिस फॉर अर्निंग बिकॉज अभी तो अपनी इतनी जरूरत नहीं है कि आप जाओ बाहर और पैसा कमाओ. बट टेक द एक्सपीरियंस एंड वॉट एवर यू आर अर्निंग यूज इट फॉर द सोसाइटी. सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग विच पापा आस्क मी कि यही शर्त पे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया. एंड एट दैट टाइम आई हैव स्टार्टेड विथ माय 10 बेडेड हॉस्पिटल. जितना भी मैं कमाती थी एट द एंड ऑफ द मंथ वी यूज टू यूज दैट मनी फॉर द, जैसे स्लम एरिया में हम जाते थे और उसका हम एक प्रोजेक्ट करते थे. तब ये कुछ पता नहीं था कि इसको सोशल वर्क करते हैं, बट मुझे बहुत खुशी मिलती थी एंड दैट कंटिन्यूज टिल टुडे एंड यस इट विल रिमेन एज इट इज. तो मेरा वाओ। मेडिकल प्रोफेशन भी रहा तो भी आई कैनॉट बिहेव एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर. And that's what I feel myself as a family physician, not a professional doctor. That's really good.
ये एक बचपन से जो आपके अंदर सोशल वर्क है ना वो दिखता है आपके कामों में, इसलिए आप मल्टीपल फैसेट में भी हो। बीइंग अ डॉक्टर, कथक आपको कैसे हेल्प करता है? बिकॉज ना डॉक्टर्स कथक प्रैक्टिस कर पाती हो कि कैसा है इस बारे में? बिकॉज एक हॉबी होनी चाहिए हमारी। रोमल मैं जब स्कूल में थी ना तब मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था, बहुत शौक था। कोई भी गाना हम्म। लगा तो आई यूज टू कीप माई बुक्स क्लोज एंड मैं कोई गाना सुनती थी, किसी पे डांस करती थी। तो फिर अगेन देन माई फादर सेड कि अगर आपको किस चीज में खुशी मिलती है तो गेट ट्रेंड, ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड खुद को मत करना। देन मैंने वायलिन सीखा एंड आई कंप्लीटेड 7 एग्जाम्स ऑफ वायलिन। आई एम अ ट्रेन वायलिनिस्ट। अखिल भारतीय गंधर्व वाह। महाविद्यालय से मैंने 7 एग्जाम्स दिए, सो आई एम अ विशारद। तो आफ्टर दैट ऐसे लगा कि चलो अभी वॉयलिन तो बजाते हैं बट अभी डांस भी करना है। तो फिर आई टुक अ ट्रेनिंग ऑफ कथक एंड आई क्लियर्ड एग्जाम्स ऑफ कथक। एंड यस समवेयर everyone is carrying the stress somewhere in the mind, and I don't want that is blockage in my brain, and that should be an obstacle for my other works. So I use this music, this dancing as a stress releaser, and yes, that definitely helps me. Wow. So, women, those who are watching us, please keep in mind, develop your hobbies because that releases your stress. And stress Yeah. jinka release hota hai, they are happy always. So, Yes, keep yes. in mind the first tip from Dr. Shubda for today's session. First tip to develop a hobby and carry forward your hobby for stress relieving. You know, Dr. Shubda, this pandemic has been very different for all of us, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज पहले तो ऐसा था कि बच्चे और हस्बैंड सब घर के बाहर गए तो घर अपना होता था, बट हमारी जो पर्सनल स्पेस थी घर की वो इन्वेड हो गई है, तो उसमें स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो गया है। एनी टिप्स फॉर दैट एंड हाउ डू वी हैंडल इट? व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी ट्रू। अपने हर एक का अपना अपना लाइफस्टाइल है, हर एक का अपना व्हाट यू पूरा बीता, ये फिक्स था सिंस ईयर्स। हम उस साचे में ढले हुए हैं कि बच्चे रहे तो मॉर्निंग में उठो, स्टडी करो या ग्राउंड पे जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेजेस में जाओ। सिंस दिस 1.5 ईयर सबका व्हाट यू से रूटीन ही चेंज हो गया है। बट जैसे पहले हम सब कंप्लेन करते थे कि नहीं यार, आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर दिस, आई एम नॉट गेटिंग टाइम विथ माई फैमिली, आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू स्पेंड टाइम विथ माई किड्स एंड ऑल। So rather than complaining, I always says to my patient, even I myself follow the things जो मैं इतना 20 साल में नहीं कर पाई due to my professional things, due to my other commitments. I am doing all the things with my family members. So use this time. This is the precious time. Hope so will not get this time again and again. So use it. Use every minute. And जो भी अपना 20 साल का backlog है, so मैं वो use कर रही हूँ. Why to give this thing कि चलो यार bad time चल रहा है? No, no, it's not bad time. God has given us a break. So use the break in a positive way. And yes, golden days are there. So just be prepared for those days. सो मुझे ऐसे कभी लवली। नहीं लगा कि ये 1.5 साल ऐसे गया, खराब गया। नो, यस आई अग्रीड कि सो मच स्ट्रेस लेवल्स आर देयर, अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स आर हैपन फ्रॉम फाइनेंशियल लेवल, फ्रॉम पर्सनल लेवल, एवरीथिंग। बट कहाँ पे कुछ अगर खराब होता है तो गॉड हैड गिवन सम व्हाट यू से अ न्यू बिगनिंग। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट. And acceptance is the great thing which makes you capable to digest the bad things and to prepare for the good things. So yes, I am happy. वाओ, दैट्स ग्रेट। सो आज की दूसरी टिप, accept the things for your happiness. So what was the first? First was to develop your hobby and second was to accept the things. So we are getting tips from doctors for your mental and emotional health too. You rightly said doctor that कि हमारा जो भी चल रहा है उसमें women's को accept करना पड़ेगा, but somewhere or the other I find कि सबके mental health के ऊपर काफी impact आया। have you noticed that and have you experienced that पेशेंट्स आके आपको कंप्लेन करते हैं, ऐसा कुछ आपने नोटिस किया है? एंड व्हाट इफ यू हैव नोटिस्ड इट, देन व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर दैट? Yes, two things are there. Since more than 1 year, OPD में clinic में बहुत सारे patients आते हैं, especially as you said very rightly, female patients आते हैं with so many physical complaints. See, notice the word, the physical complaints. They never says कि कुछ mental complaints है. They come with some physical complaints. Like जैसे nervousness आता है, जैसे frustration आता है, जैसे irritation आता है. And जब मैं उनकी history लेती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ, तो I definitely came to know कि the symptoms are not from the
the physical things. The origin is from the mind. So ये 1.5 साल का जो period गया है, no one was ready for that. It is a sudden and violent attacks on everybody's mind. So no one was prepared for that. Those who accept, yes, 30 to 40% people are really enjoying nowadays also. But more than 60% population is affected on mental level because of they are not prepared for the bad things. So I always says कि be ready for the bad, but yes, don't forget to hope for the best. So मेरे पेशेंट जो आते हैं कि मेरा बीपी बढ़ गया है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रहा है, मुझे स्लीपलेसनेस हो रहा है, आई कांट स्लीप साउंड ड्यूरिंग माय व्हाट यू से, जैसे मैं पहले प्रॉपर रेस्ट लेती थी अभी नहीं ले पा रही हूँ, मुझे बहुत सारा टेंशन आता है, मेरे बच्चों का करियर कैसा होगा, या फिर मेरे सिंस ईयर आई एम नॉट गेटिंग माय सैलरी, मेरे घर पे इतने सारे बीमार लोग हैं, मेरे घर में इतने सारे कोविड पॉजिटिव हो गए, नाउ वी आर अभी पेपर में आता है कि थर्ड वेव आ जाएगा. तो मेरा एक ही सेंटेंस सिंस 1 ईयर में सब पेशेंट्स को वही मेरी टेप रिपीट रहती है, यू आर नॉट ओनली द सफरर, this is the global problem. So when this is the global problem, it's very important to face it. And problem तो हर एक के लाइफ में आता है. Forget about this pandemic जैसे तो आते जाते लाइक वर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, इसके पहले भी आते गए हैं. बट इफ यू आर दैट मच स्ट्रांग, इफ यू डेवलप योर सेल्फ दैट मच स्ट्रांग, यू कैन फेस एनीथिंग इन द लाइफ. सो ये जैसे बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से फिटनेस का डेफिनेशन नॉट द फिजिकल फिटनेस. If you are physical as well as mental fitness is there, yes, then you are fit, because mind plays a great role. Whatever you are thinking, your body is replying accordingly. So जैसे आपने कुछ नेगेटिव सोच लिया तो yes, आपके पैरामीटर्स वैसे लो जाएंगे. आपने पॉजिटिव सोच लिया तो your body is balanced. So the balance, the remote control is in your mind. So before you visit your doctor, it's very important to balance yourself. And हर एक का अलग तरीका रहता है to get balance. जैसे मेरी हॉबी है कि अगर मैं डांस करूँ, अगर मैं मेरे फ्रेंड के साथ बात करूं, अगर मैं म्यूजिक सुनूं, तो मेरा ये स्ट्रेस रिलीजर है. सो ट्राई टू फाइंड योर स्ट्रेस रिलीजर एंड स्टिक टू दैट एंड गेट योरसेल्फ रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेस. देन जैसे बोलते हैं ना, आप 10 बार डॉक्टर के पास जाओगे तो 8 बार का माइनस हो जाएगा, एंड द रियल फिजिकल सिम्टम्स के साथ आप डॉक्टर के पास जाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर माइंड. Absolutely. So you have pointed out things very promptly and very beautifully. कि mind plays a very vital role when it comes to physical ailments. Mind ठीक है तो body automatically खुद को ठीक कर लेती है. So very important. Mental health, nowadays you listen so much about it. Mental health को ठीक करो, ये करो. आप कोई tips देंगे? Few tips. First of all, you accept your capacities. Don't compare yourself with any other one, because हर एक का कैपेसिटी अलग रहता है, हर एक का what you say expectations अलग रहता है, हर एक का priorities अलग रहता है. So you should know yourself, what you are, where you will be in future, and what are your goals. If you mark it very well, so then you can follow that and you can achieve your goals. अगर मेरे साथ वाला यहाँ पे जाता है और मुझे भी वहाँ पे जाना है, then comparison comes, then negative symptoms like jealousy, like frustration, everything, the what you say, the failure का ये आ जाता है. तो it's very important to know yourself. It's very important. मुझे क्या करना है, ये गोल लाइफ का क्लियर होना चाहिए. अगर वो गोल क्लियर है तो yes, you can follow and you can plan your life. So again, my funda is plan your life and go accordingly. Okay. Plan your life and go accordingly. So this is something that you are suggesting people, but there are people who cannot plan it out things. तो उनके लिए लाइफ काफी हैफजार्ड हो जाती है. Especially अगर से आप देखेंगे, you and me, we can plan it out things क्योंकि we think that we have so much to do in our life. बट एक जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो दे हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग, एंड ससेप्टेबिलिटी ऑफ पेंडेमिक इज मोर इन देम. दे आर मोर इन डिप्रेशन, राइट? एंड दे कंप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स. हाउ टू डील विद दैट? वेरी ट्रू. यहाँ पे जो रोल आता है रोमल, द फैमिली मेंबर्स का, जो फ्यूचर जनरेशन, यंगर जनरेशन एंड यस जो मिडिल जनरेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक केयर ऑफ ऑल द एल्डर वंस. द रीजन इज दैट एक 10 साल पहले ऐसे सिचुएशंस था कि घर के सब लोग बाहर जॉब के लिए जाते थे, तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते थे कि दिन भर में पेशेंट्स को, ओल्ड एज लोगों को तकलीफ होती थी, एंड वंस द फैमिली मेंबर्स आर एट होम, वो ठीक हो जाते थे. सो यहाँ पे रीजन
क्या था, द निग्लेक्टेड फीलिंग, द फीलिंग लोनलीनेस, ये रीजन था. आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू इयर्स, ये एक्सेप्टेंस आ गया ओल्ड एज पीपल में कि चलो घर पे अभी मेरी बहू मेरे लड़का पूरा दिन चले जाएंगे, मेरे बच्चे सब चले जाएंगे, एंड फॉर 10 to 6 वी वेर अलोन. ये एक्सेप्टेंस आ गया था. अभी ऐसे हो गया है कि एक तो उनको डर गया में आता था कि ओल्ड एज पीपल्स आर मोर एक्सपेक्टेड टू गेट द कोरोना एंड ऑल. सेकंड थिंग, जो घर पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो दो फैमिली मेंबर्स आर एट होम, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एल्डर वंस. सो अगेन निग्लेक्टेड फीलिंग वाज डबल, बिकॉज घर पे है और ध्यान नहीं दे रहे हैं. सो दैट इज द थिंग. एंड सेकंड थिंग इज व्हाट दे नीड इज द ओनली इमोशनल सपोर्ट. ओल्ड एज पीपल को कुछ नहीं चाहिए, ना बाहर घूमना है, ना होटलिंग करना है, ना कपड़ा चाहिए, ना कुछ नहीं. व्हाट दे वांट इज ओनली योर इमोशनल सपोर्ट. So we be with them emotionally, be with them, share the things with them, spend quality time. Yes, I agree, due to our professional commitments we cannot give the quantity time, but at least give quality times and emotional support. Yes, they are very happy. So it's in our hand. It's in our hands. So true. And Dr. Shubda, this has come out of the blue. कि आपको कभी किसी ने बोला है डॉक्टर आप तो खुद ही डॉक्टर हो, आप तो कभी बीमार पड़ते ही नहीं होगे? नहीं. You will not believe, but 2 months back I had operated for hysterectomy, removal of uterus, because I was Okay. a bad sufferer of menstrual problems, and with the right advice of my gynecologist, I had removed my uterus. But once again, the same fund of my life, acceptance is very important. You will not believe, on 7th day of my surgery, I started with my clinic with the same energy and with the same hope and with the same happy face. Wow, lovely. Hats off to you, doctor. Hats off to you कि एंड आई ये ऑलवेज कर सेज पाए. कि जो मेरे पास मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स आते हैं कि मुझे इतना प्रॉब्लम है, मुझे इतना ट्यूमर है, मुझे इतना ये है, तो आई ऑलवेज सेज कि वी आर वुमेन्स, सो ब्लीड विथ प्राइड. Don't complain unless and until your doctor label it as a menstrual problem. You don't label it as a problem. Accept it. That's So that is really the good. thing. That is really really good. Doctor, you are very clear with your fundas in life. ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. That's it. That's all. Very direct, and very upfront in whatever you feel it and you do it. Amazing. Doctor, one more thing would like to know from you. Apart from your doctor and social work, what fascinates you the most? मुझे फैशन लाइफ का बहुत क्रेज है, बहुत क्रेज है. अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैं फैशन डिजाइनर या फैशन के यहाँ पे जाती थी. मुझे बहुत शुरू से मुझे इस चीज का बहुत शौक है, बट माय प्रोफेशन इज नॉट परमिटिंग मी टू एंटर फुल फ्लेज इन दैट, एंड माय वन ऑफ द प्रायोरिटी इज माय प्रोफेशन. सो आई कांट लीव माय प्रोफेशन, बट यस, विद द एट द सेम टाइम मैं फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ. मैं इंटरनेशनल फैशन बोर्ड पे मैं एडवाइजर हूँ. तो यस, मैं वहाँ पे भी अपना काम कर रही हूँ. सो मैंने बोला ना कि लाइफ एक बार आता है, ट्राई टू फुलफिल ऑल योर डिमांड्स, एंड इट्स यू हु आर रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल इट. डोंट ब्लेम अदर्स Absolutely. कि नहीं हो पा रहा है. नहीं, इट्स यू. अगर आप कंप्लीट भी करते हो आपकी डिमांड्स तो क्रेडिट गोज टू यू. नहीं कंप्लीट करते हो तो फेल्योर इज ऑल्सो इज योर्स. That is true. That is absolutely true. तो फैशन इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा आइकन है या ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी पर्सनालिटी को आपको दिल लगा कि यार मुझे वैसा बनना है, या somewhat that's an inspiration for me? मैं इंस्पिरेशन नहीं कहूंगी, इंस्पिरेशन तो बहुत सारे हैं, बट मुझे सुष्मिता सेन जैसा काम करना है. Yeah, it's Oh very high wow. end, but yes, she is my icon. No, because she is not only stick to the fashion industry, but जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी तो उसने जो वो स्टेज पे कहा था, the only woman who fulfilled the things, the only woman. So she Wow. adopted to, and she doing Agreed. social work. So that is the great thing. So the things are not limited on the only the stage and not only for the claps, but she actually done it. So she's my icon. For you, she's an icon. For me, she's an icon too. Yes. I truly love her, the way she is, her grace, the Yes. way she is. Superb, superb. Now, since we have talked so much about physical, mental health, your different aspects of life, do you think food really plays a very vital role when it comes to immunity or the thought process?
ये मिथ होता है एक. You are asking about food. Food या that मैं we. उसके बारे में एक बताऊंगी. अभी का जो जनरेशन है, दे आर रनिंग बिहाइंड द एडवर्टाइजमेंट्स. दे आर कॉपिंग, जो उनका जो भी कोई आइडल रहता है वो कॉपी करता है कि आज ये ऐड देख लिया, ये प्रोटीन खरीद लिया, कल ये देख लिया, ये खरीद लिया. नो नो यार, फॉर दैट तो यू हैव टू कंसर्न अबाउट योर डॉक्टर्स, बिकॉज nowadays we are getting so many patients the only because of wrong food habits. So it's very important to balance your food, and I'm proudly saying ki Indian food is the best and the ideal one. So don't skip your breakfast, take proper lunch, take proper diet. Dieting is different and diet is different. So whatever you want to do, please take advice of your doctor, because everything is not suitable for everyone. सो हर एक का बॉडी अलग रहता है. यहाँ पे मैं एक बात जरूर बोलूंगी, गिव इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअलाइजेशन. यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल. सो जो दूसरे के लिए सूट करता है वो आपके लिए नहीं करेगा. येस, आई अग्रीड, फॉर फिटनेस यू हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज, यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर डाइट, यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर स्लीप, बट प्लीज डोंट डू इट ऑन योर ओन. इन्वॉल्व योर डॉक्टर एंड येस, यू विल अचीव योर गोल. सो यहाँ पे डॉक्टर का रोल बहुत जरूरी है, रादर देन कॉपिंग एनी अदर एल्स. Wow. So अभी का ट्रेंड जब आप देखोगे, so lean body is supposed to be a healthy body. Is it true? सी, एक बात ऐसा है, जैसे बहुत सालों पहले एक अप्रूव्ड ये है डाइट एंड हाइट का चार्ट जो है, दैट इज द आइडियल थिंग. आपका हाइट कितना है एंड आपका वेट कितना है, दैट इज द आइडियल थिंग. फिर आप लीन हो या ओवर वेट हो, ये वेइंग मशीन से मत डिसाइड करो. यू जस्ट हैव टू व्हाट यू से कंपेयर योर हाइट एंड योर वेट. इफ इट्स ओके एंड विद दैट इफ यू आर असिम्प्टोमेटिक, देन यस. अगर मैं 45 kg की हूँ एंड आई एम असिम्प्टोमेटिक, दैट मीन्स आई एम नॉट हेल्दी, ऐसे नहीं है. अभी आपका बॉडी सिम्टम्स नहीं दिखा रही है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप कुछ प्रॉब्लम्स को, मीन्स व्हाट यू से, यू आर कैरिंग योर प्रॉब्लम्स एंड द टाइम कम्स व्हेन इट बर्स्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बॉडी हेल्दी. अभी जैसे डाइटिंग का फंडा आया है, अलग अलग डाइट आए हैं. येस, एवरीथिंग इज राइट, बट वेदर इट इज सुटेबल और नॉट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और वेट लॉस वेट गेन का फंडा अभी आया है यार, बट पहले से तो हम डॉक्टर बोल रहे हैं ना कि आपका वेट ज्यादा है, बट हम वो किस बलबूते पे बोल रहे हैं, दैट डाइट, हाइट एंड वेट चार्ट. जो जैसे जो वो हाइट एंड वेट चार्ट में आपका बॉडी मास इंडेक्स रहता है, हर एक ऑर्गन का वेट एंड उसके आपका, वेदर यू आर मेल वेदर यू आर फीमेल, उसका हाइट कितना है, उसका वेट कितना है, इट इज मेडिकली प्रूवन. सो आई एम नॉट बिलीविंग विद दिस कि आप इतना वेट घटाओ, इतना वेट घटाओ. अभी बहुत सारा मेरे पास ऐसे जनरेशन आता है कि मैडम मैंने महीने में 3 kg कम किया. सो इज इट ओके? दीज आर नॉट द क्वेश्चंस व्हिच आर एंटरटेन बाय मी. Not at all. Wow. So, we have learned so many lessons from you that stick to the ground. एक तो first hobby develop करो, which is very important. Second, accept करो चीजों को जो बहुत ज्यादा जरूरी है. And third, when something happens which is not natural, then bounce back in your life with same enthusiasm, same energy. And fourth, stick to your grounds is very very important कि आप कहाँ से आए हो. And fifth, हर एक चीज हर एक को applicable नहीं होती है, so find your individual plans. So all these things are the 5 tips given by Dr. Shubda. So Dr. Shubda, it was tremendous. It was very nice talking to you on different aspects of life with regards to mental health, physical health, women's psychology, and food. You are a versatile personality who has answers for everything. Thank you for joining us today, giving you and sharing your knowledge with us, being part of this show, and enlightening, and giving the answers which are very very practical for every mind to know. Thank you so much on behalf of VNWC team, Bobby Karnani. I would like to thank you for coming on the show and joining us. And viewers, those who are watching us, stay tuned with us. We are coming up with one more diamond tomorrow. Same time, stay connected. Till then, bye. Yes, thank Thank you. you, Thank you doctor. very much. Thank you. And one take home message from me is be happy always and by always. Yes, thank you, Romal. And Thank thank you, you. dear Bobby. Yes, thank you. Bye. Bye.